So I will draw a situation. Okay. Okay. मैं एक सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ और all right. So here you go. So you have a place. Let me just draw a rough diagram of that. So this is an area, some area, okay, and that this can be. Sorry. So this is an area where you have some magnetic field, okay, and so this is an area with magnetic field. Okay. If a charge enters it in a perpendicular direction with a velocity v, so this is the way charge enters this. Okay, Okay. it's a charge. So let's say this is a charge of plus q with velocity v. Describe the motion of this charge once it enters the uniform magnetic field. That is the question. Okay. Hope the question is clear. Hmm. Right? Force on a velocity is v. This is b, right? This is b. Hmm. यहाँ पे b exist करता है. Okay. Any thoughts? Motion describe करना है. हाँ जी. Motion describe करना है. Describe the motion. Okay. नहीं sir. Okay. See, whenever the charge enters a uniform magnetic field in a perpendicular direction, the force is given by
Q V cross B, Okay. right? So here it is Q V into B and sine of 90, right? Hmm. So which means the velocity is, for example, in a 3D axis की अगर मैं बात करूँ या इसकी भी बात करूँ, तो V to B, so velocity is in this direction, B is inward, right? तो Yes, sir. मतलब velocity ऐसी है, B ऐसे है, तो V to B जाता हूँ मैं, right? The force is now going to be go from V to B. Hmm. Screw घुमाओ ऐसे, V cross B, downward, Yes, sir. right? So which means the charge will start going like this. So force will always be perpendicular to velocity, Hmm. and force will also be perpendicular to B. ये पढ़ रखा है हमने. हाँ पढ़ा है. जब फोर्स और V परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, वो कौन सी सिचुएशन थी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Circular में हाँ यही. Correct. So when the body enters perpendicularly in a magnetic field so that its velocity is perpendicular, then this is the way it starts moving. It traverses a, which means this is equal to, MV square by R. just a repetition of what we studied. Yes, sir. So if you find that you are entering a magnetic field at a perpendicular direction, you will start moving in a circle, Hmm. and then you will come without change in velocity. क्योंकि the magnetic field, this magnetic field force does no work. Work done नहीं करती है, Hmm. क्योंकि perpendicular होती है ना. Yes, sir. I told you, work is done when the force and displacement have an angle. Correct. So if the angle is 90, 0. Hmm. So in a circular motion also, if you notice, your kinetic energy is always half mv square, Correct. mass of the charge. Hmm. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का मतलब है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व्ड एंड देयर इज नो एक्सटर्नल मतलब a force which can do work on it. Force can do work on a mass only when there is an angle between force and the displacement which is less than 90 degrees. Hmm. If force and centripetal force ऐसे होती है सेंटर की तरफ, वेलोसिटी Correct. ऐसे है. तो यही यही हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स में भी. द फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ द वेलोसिटी एनीवेयर, okay, for example, I want to show the velocity here, it is a tangent, हाँ. Correct. but the direction of that force which is acting on it is towards the center of the circle, Okay. 90 डिग्री के बीच में एक दूसरे से. Hmm. Got it? So point was that an indirect question. Hmm. ठीक है. Now what we will do, we will make this charge enter. So let me ask you one more. Okay, so let's say you have a situation where this is the magnetic field, these are the magnetic field inside the page. Okay, now these are inside the page. Page. समझ में आ रहा है ना, inside the page. Okay, so हाँ. let's say this is your, and I'm showing uniform, there is equal spacing between the
So ये मेरे magnetic field lines हैं और okay. Now a charge enters this region, and when the charge enters the region, it enters like this, parallel to the magnetic field. Hmm. That is the only difference. It is now entering parallel to the magnetic field. Correct. Okay, so the question is, if a charge enters a magnetic field parallel to the magnetic field, what is the force it experiences? So that's your B, and Hmm. that's your charge. That's your charge. Velocity is again V. This is your magnetic field inside, and so the charge is also going inside the page. Okay. Right? What is the force experienced by the charge? Velocity is known, charge का charge Q है, Q plus. Magnetic field is B. Velocity is V. Only thing is, now the velocity is parallel to B. Okay. What is the force? If you enter the field parallel instead of any thoughts? इसमें फोर्स नहीं होगा. Correct. Because the angle is 0. 0. You're right. Okay. All right. Let's create one more situation, okay? So Okay. this is your region of charge, sorry, magnetic field. So these are the magnetic field lines. Now the charge enters this field at an angle of theta degrees. Hmm. So the velocity, this is the velocity.
ठीक है, दिस इज द ठीक है। वेलोसिटी एंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी अगेन. हम्म, Now, if you notice, this velocity has two components. One is the velocity, which you can break it down as this and this velocity. ठीक है? ठीक है। Okay, let me just think through. अगर ये 3D के point of view से देखता हूँ मैं. Okay, let me just make it enter, and the magnetic field is okay. Let me redraw this so that it's easier to understand. ये थोड़ा सा समझाने में मुश्किल होगा. Let me redraw this. परपेंडिकुलर केस में सर्कुलर, पैरेलल के केस में जीरो फोर्स. तो एक हम्म, सर्कुलर मोशन और एक अनचेंज्ड मोशन. थोड़ा सा इजी डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझाना. हाँ। साइडवेज. ओके, so this is your actual situation. So you have third scenario where the charge enters the magnetic field at an angle. Okay, so let's say this is your situation. The magnetic field is in this direction, B. हम्म, ठीक है? The velocity is this. So which ओके। means the magnetic field is rightwards. All the हम्म, lines are on the right hand side. ठीक है। मतलब ये सॉरी ये नहीं, ये तो कुछ और ही बन गया. This is the direction of magnetic field. You can draw multiple parallel lines and you will get it. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. हम्म, मैं और नहीं बना रहा, ठीक है? ठीक है, समझ गया। टाइम वेस्ट होता है इसमें बड़ा. हाँ। ठीक है, तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. द plane in which the velocity enters. Okay, so this is your y. Okay, that's your y. That's your x, and this is your z. So the velocity is entering in xy plane. The हम्म, charge. प्रोजेक्टाइल में यस नहीं सर। होता जैसे, हाँ। तो ऐसे प्रोजेक्ट करा और एट एन एंगल थीटा करा टू स्टार्ट विद. ठीक अब है। हमें डिस्क्राइब करना है इसका मोशन. तो देखो इसके अंदर क्या होगा. वन पार्ट ऑफ द वेलोसिटी विल बी v sin theta. हम्म, The other will be v. cos। Do you see that if I split v cos theta is parallel to b? करेक्ट। So due to v cos theta, the force experienced by the charge, the magnetic force will not exist because of v cos theta. हम्म, But look at v sin theta. ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको भेजा था. समथिंग वेरी सिमिलर, बट वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे था. हम्म, राइट? तो यस सर। ये वाला जो कंपोनेंट है v sin थीटा वाला, ये इस चार्ज को फोर्स करेगा टू मूव इन अ सर्कल. हम्म, ये वाला. ठीक है। और v cos थीटा भी है बॉडी के पास. फोर्स तो नहीं है लेकिन प्रोजेक्टाइल की तरह v cos थीटा तो है आगे जाने के लिए. हाँ है। तो क्या होगा जब ये आगे जाने की कोशिश भी करेगा, इफ इट ट्राइज टू
this is what will happen. It will go, it will be coming back not at the same point, पर थोड़ा आगे चला जाएगा. कोशिश करेगा सर्कल बनाने की, कि मैं एक सर्कल ही बना लेता हूं फिर. हम्म. बट होगा क्या कि वो सर्कल बना नहीं पाएगा, वो आगे चला जाएगा वी कॉस थीटा से. अच्छा. ये थोड़ा आगे जाना पड़ेगा ना इसको. हम्म. इट डिड नॉट लैंडेड क्योंकि इसके पास वी कॉस थीटा भी है, यस सर. जिसको हॉरिजॉन्टली मूव करा रही है. हम्म. समझ गया. तो ये जो थोड़ा थोड़ा हर टर्न में आगे जा रहे हो आप, सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन एवरी टर्न. हम्म. इफ देयर वाज नो वी कॉस थीटा टू टेक इट फॉरवर्ड, तो यहीं पे सर्कल काटते रहते आप. हाँ, बिल्कुल. लेकिन अब क्या हो रहा है, आप हर टर्न में थोड़ा सा आगे भी चले जाते हो. ये आगे जा रहे हो ना. हम्म. ये जो थोड़ा सा आगे जाने का होता है, इसको बोलते हैं पिच. जैसे आपने इफ यू हैव सीन अ स्क्रू, स्क्रू में भी पिच होती है, वो गोल गोल घुमाते हैं तो उस पर पिच बनी होती है एक. हाँ, बनी होती है. हाँ, वही है ये. दैट्स अ डायग्राम यू गेट नाउ, ठीक है. राइट. And your radius, obviously, you if you want to find out. So pitch is the horizontal distance traveled in after every one turn. हम्म. Horizontal distance through the revolution. अपनी तरफ से तो रेवोल्यूशन पूरी करना चाहता है, बट थोड़ा सा आगे चला जाता है. तो इट एंड्स हियर, इट स्टार्ट्स हियर एंड एंड समवेयर इधर. अगेन इट मूव्स बट इट एंड्स हियर. हम्म. है ना. तो यस सर. बेसिकली ये जो एंडिंग वाला हिसाब है, ये मोशन जो है, ये जो इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन. ये सर्कुलर मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन का मिक्स है. ये हम्म. हॉरिजॉन्टल है पिच, और एक सर्कल भी जुड़ा हुआ है. यस दोनों सर. मिला के वो स्क्रू के जो पिच होती है ना, ऐसे वो जो, उसको हेलिक्स बोलते हैं मैथ्स में. इट्स कॉल्ड हेलिक्स. दिस ठीक है. डायग्राम इज अ हेलिक्स, right? If you have to find the circle radius, which is you obviously it is the centripetal force is coming from q v sine theta is equal to mv square by r. हम्म. वही सेम रेडियस निकल आएगा. यस सर. सो दिस इम्प्लाइज ये भी कट गया, v एक v भी कट गया. सो q b sine theta is equal to mv by r. So r is equal to mv by qb sine theta. So that's a radius of your helix, and the pitch, which is how much distance has it moved in one complete revolution. ये distance भी निकालना है हमें. करेक्ट. तो देखो, एक revolution का जो time period होता है, if you remember time period निकालने के लिए what were we doing? The time period was the velocity which will v sin theta, जो कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि हम्म. perpendicular है. वेलोसिटी यस तो सर. बदल गई तो काइनेटिक एनर्जी बदल गई, मतलब वर्क डन हो गया, वो पॉसिबल नहीं इसके अंदर, राइट. नहीं. So we know हाँ. speed is equal to distance upon time. So speed we know is v. Distance is 2 pi r. Time is the time period for one revolution. हम्म. Radius तो हमने निकाल ही लिया. करेक्ट. So time period is equal to 2 pi r by v is equal to 2 pi mv QB sin theta 2 pi mv QB sin theta v. ये r की वैल्यू डालिए बस. ठीक mv है.
by QB, right? So time period भी आपका निकल आया. Got it? So this is the way you will find the velocity time period of the revolution. So इसमें तो कुछ कट रहा है. V कट गया. हाँ V कट गया. So this is 2 pi m upon Q और B sin थीटा. रेडियस का फॉर्मूला ये डाला था मैंने. ठीक है. So if you have to find the pitch, जितना पूरी रेवोल्यूशन को टाइम लग रहा है होने में, उसी टाइम में तो आगे भी तो बढ़ गए आप. ये एक रेवोल्यूशन है, ये देखो ये. ठीक है. जो मैं डार्क कर रहा हूँ. फिर अगली, लेकिन सर्कल हो नहीं पाता क्योंकि आगे चले जाते हो. सो पिच विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव विच इज v cos थीटा इनटू t. ओके सर. समझ आ गया? हाँ. So we can find the pitch also. So you should know the question very well कि क्वेश्चन में एंट्री कैसे हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ठीक है. That distinction should be there in your mind clearly. How you have entered? Have you entered parallel, perpendicular, or are you making an angle of theta with the magnetic field? When I say theta, velocity का angle. V is it an angle of theta with B? If there is an angle between them, you are bound to get helix. Okay? Understood. Clear है ना? हाँ. Okay, and also in some scenarios what happens is, ये भी हमने discuss करा था. So the question can be motion of a charge when both electric field and magnetic field are present and perpendicular. So E is perpendicular to B. So what do, you have a mechanism to accelerate the charge through a potential difference. It accelerates. So what you do is the electric field accelerates it. So the kinetic energy which you gain due to the potential difference, that means across a electric field, a charge runs. Yes, sir. So kinetic energy is half mv square, and in terms of coulombs the same is written as QE into, we will write it as the charge into potential difference, joules. ठीक है. So if a charge is made to move across a potential difference of V, this is the amount of energy it will gain. ठीक है? ठीक है. तो अब आपने एक चार्ज लिया, उसको पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करके you made it enter a zone where you have the magnetic field and electric field present simultaneously. So let's say the magnetic field is this. This is the magnetic field in which you have entered. And you have already acquired some velocity, which is Q potential is equal to half mv square. So 2qv divided by m under root. This is the velocity with which you're entering. And obviously, you're entering in a perpendicular manner, so your circular motion should start. Yes, sir. But I am going to do a small subtle change. I am going to put a electric field also here. Okay. Otherwise, you would have moved like this, because you're moving in a perpendicular direction. This is your velocity, which you have acquired through a potential difference of V. Yes, sir. Now when it enters,
if I have the upper plate as positive and lower plate as negative, and if I see the net force on it at any point, I will realize that without electric field, it would have moved something like this. The motion would have been something like this, Hmm. which means the force is all the magnetic field force would be like this Correct. towards the radial center, right? But there is an electric field also, remember. So this is positive and negative, and it's a positive charge. That positive charge will do what? This electric field, which is downward, will push the charge downward, Hmm. right? So if you acquire a situation in which the magnetic field force on the charge, the force due to magnetic field force, पहली बात तो है कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. सो ये वेलोसिटी है एंट्री पे, एट द पॉइंट ऑफ एंट्री द Hmm. मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. ये रहा ना. Yes, sir. सो आई एम मूविंग फ्रॉम वी टू बी, वी क्रॉस बी. सो मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस डाउनवर्ड. Correct. ठीक है. एंड से दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स नॉट से दिस इज पॉजिटिव. Q is experiment is being done with the help of electrons. Hmm. Right? Electron will get attracted towards the positive. So this is an electron. Right? So electron को क्या होगा? Electron would like to go up. बिल्कुल. Right? Whereas the magnetic field force is downward. Hmm. Right? So electric field force is so this is negative and this is positive. और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो ये वाली हमने निकाली थी, ये तो तब था ना जब पॉजिटिव चार्ज था. Positive charge. तो इसको रिवर्स कर रहा हूं मैं. दिस इज माई एफ बी. Hmm. So as soon as the electron enters, it experiences a magnetic field force, Okay. QVB, sine 90. And the electric field will positive side is this side. Hmm. So if it's an electron, it will like to go down. Down जाएगा. हाँ. है ना? So if this is the F electric, if everywhere I do this adjustment that FB, which is QVB, and FE, which is QE, and Q is the charge on the electron. If these two Correct. become equal, then the electron will go out undeflected. Okay. Because the net force is upward and downward only. Hmm. So it will go straight. Yes, sir. If FB wins, which means QVB, which is upward for an electron now, becomes greater than the electric field force, what will happen? It will start going up. अब जाएगा. हाँ. और है नेट फोर्स तो फिर परपेंडिकुलर है, जो भी आएगी वो ऐसे आ रही है. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड विंस, राइट, Hmm. गॉट इट. Yes, sir. सो ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ था, वेलोसिटी ये थी. सो इफ आई डू अ V क्रॉस B, द फोर्स इज डाउनवर्ड. बट ये तो तब है ना डाउनवर्ड जब ये प्लस चार्ज होता, हाँ. लेकिन हमें उल्टा करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ नेगेटिव चार्ज. Yes, sir. So sometimes you may get a question where you start with this acceleration of charge
with the help of potential. So you know the initial velocity also of the charge, entry velocity. हम्म ये एक्सेलरेट करवा के फिर यहाँ पे भेज रहे हैं, यहाँ एक्सेलरेट करवा लिया, काइनेटिक एनर्जी दे दी, हम्म और फिर एंट्री यहाँ पे करवा रहे हैं उसकी, और फिर यहाँ पे दो सिस्टम लगा दिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. Okay. Okay, let's say we are, let's do one question. So now in your mind you would know this is a case of pure centripetal because यहाँ पे it's we are entering perpendicular, हम्म यहाँ पे parallel, यहाँ पे helix, यहाँ पे electric field और magnetic field दोनों, यस सर. right? So let me just, so there is a beam of protons that enters a magnetic field. So, okay, let's do a small practice. Okay. So there is a beam of protons and it enters a magnetic, uniform magnetic field. The B is given to be 0.3 Tesla. Okay. And these are protons, so positive charges. हम्म And the velocity with which they enter, the angle they make with the B magnetic field is 60 degree. If you see the figure, this angle is 60. The angle between V and B यस सर. दिया हुआ है. तो 60 डिग्री जब मैं लिख रहा हूं, आपको क्या निकालना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिक्स. करो, यू हैव टू डू दिस. So these are protons. So protons means the charge on a proton is coulomb. The mass of the proton is 1838 times the mass of the electron. You just need to find out that what is the radius of this revolution, which is the helix, the pitch. Pitch नहीं निकालने को बोला, सिर्फ रेडियस बोला है. ये सर्कल मतलब एक ही जगह पे नहीं रुका, सर्कल थोड़ा आगे चला गया. हम्म Start or end point. Try this. Now you know the theory very accurately. Try करोगे? यस You सर. can you can read the notes. You can go through them. You can see क्या पैरेलल था, क्या परपेंडिकुलर था, और हेलिकल मोशन के लिए क्या इक्वेशन थी. फाइनली तो क्यू वी भी साइन थीटा ही रह जाता है ना एज अ मैग्नेटिक फोर्स विच प्रोवाइड्स यू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो 11th स्टैंडर्ड का सर्कल भी आना चाहिए.
So I'm not helping you. I'm just letting you think. यस सर, बस थोड़ा सा वो पढ़ रहा हूँ. ये मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिखा हुआ है? ये पूछ रहे हो ये वाला? यस सर. 1838 times the mass of electron. अच्छा. You can take it direct also if you know the डायरेक्ट values. क्योंकि काफी यूज होती है ये. But you can इसका write it at directly also. 3 point. You can check the values. Mass of the proton is 1 point. 1.67 into 10 to the You power can use minus this 1. also. चलेगा. ठीक. You can. चलेगा. Works for me. ठीक.
कैलकुलेशन इंटेंसिव है बड़ा। हम्म। ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगी। हम्म। फाइंड क्या करना था? रेडियस। सिर्फ रेडियस निकालना है। पिच भी निकाल सकते हो अगर टाइम पीरियड आ गया तो। अच्छा, रेडियस था क्या? सो मैंने ओनली टाइम रेडियस, पीरियड फालतू रेडियस। में निकाल नहीं दिया। नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वो ठीक। लुक एट दिस इफ यू अंडरस्टैंड। आई एम गिविंग यू अ डायग्राम। छोड़ दो, हो गया। पर बस हम्म। आंसर में मीटर्स लिख देना। रेडियस मीटर्स में आ रहा है। यस सर। दिस वाज जेई मेंस 2020 क्वेश्चन। ओके। Okay, so this is just a नो यू नो, पढ़ लो इसको। स्पाइरल है, हेलिक्स एक ही बात होती है। हम्म। ठीक है जी। ठीक है सर। So next question. So we have question number 2. Let's change the page. ओके। है ना? This is हम्म। now going again into troubling direction. यस सर। All right. So let's say we have a situation where the magnetic field B in an area is given by this expression. I'm just writing that. ओके। Okay. Some magnetic field somewhere. हम्म। And the at t equal to 0, the electron enters this magnetic field with a velocity of, wait, I hope I've written it correctly, nahi to, yes. So this is minus vector, मतलब vector notation में है सारा. So this is minus and this is plus. This हम्म। is when the electron enters with this velocity. ओके। Okay, you have to find out
if this is the case that electron enters with this velocity with meter per second, what is the angle alpha between V and B at the point of entry? So you have to find first angle between B and V. This is first part, more a vector question than anything else. Then second part is, what is the radius of the helical structure? जो हमेशा ही पूछते हैं radius. हम्म Okay. बताओ जी. I think that is not a problem if you know B and V. But for finding the radius of the helix, in the previous question you were given the angle, हम्म so you could straight away यस सर put the value. But in this case, they have come one step backwards, and they're saying I'm entering at an angle, and therefore I have an helix. I'm not entering perpendicular to you. ठीक Helix तो तभी बनेगा ना when you enter at an angle. हम्म Any guesses? बस एक How do you find angle between two vectors A and B? If A is given to be, say, A1I plus A2J plus A3K, and B is given to be
You have to find the angle between the two vectors. So the trick is A dot B is given by magnitude of A into magnitude of B into cos of theta. Scalar product, dot product. नहीं पता? नहीं, ये सब तो पता है. So just do a dot product. And find theta. इन दोनों को नीचे ले जाओ. So this gives you the angle. कोई वैल्यू आ जाएगी, हाफ आ सकती है, कुछ भी आ सकती है. यस सर. एंड देन रेडियस ऑफ द हेलिक्स, वो तो आता ही है, वो तो अभी ऊपर ही है. राइट? वो पता है आपकी. रेडियस ऑफ द हेलिक्स मींस द सेंट्रिपिटल फोर्स इज कमिंग फ्रॉम here. So you can find this radius now. It's an electron that was given. So electron का mass भी पता है, charge भी पता है, यस सर. velocity magnitude भी पता है. अगर cos थीटा मालूम है तो sin थीटा भी निकल जाएगा. Clear? यस सर. Okay. All right. So this is what is happening. There is a situation. Practice 3. Okay. ओके. Let us see. So you have a place where you have magnetic field, and a similar place is available somewhere else also. ठीक है? So both the situations have a magnetic field. Now an electron enters the magnetic field here. ठीक है? ठीक है. What happens is it undergoes a motion. And then it comes out and enters the second. ओके. And then it revolves again. And then it comes out again. Okay, so in the case number second, the radius that was shown was smaller. Okay, and this is your case number 2. And in the case number 1, the radius was larger. दिख भी रहा है, थोड़ा सा बड़ा है. हाँ, दिख रहा है. You have to do one thing. One, you have to compare V1 माने inside the field. Okay. And you have to compare V2. The velocities, what is V1 upon V2? The second thing you need to tell me is in which area, 1 or 2, the magnetic field is stronger. It is clearly known that R1 is greater than R2.
you have to do a comparison of the velocities, and then you have to do a comparison of the magnetic fields, which means you have to decide who is bigger. Okay. And it is given that obviously as you can see, the circle is in the same plane. Only thing is इसमें भी ऐसे उसके वैसे ही आ रहा है. So the Hmm. magnetic fields are perpendicular Yes, sir. to the plane. मतलब अंदर है. Same charge, some charge. हाँ. पूरा रास्ता घूम के ऐसे बाहर आ गया. You have to, question number 1 is this. The question number 2 is, you just need to tell me which of the following is, or you can also tell me. I leave it to your judgment. Okay, sir. Interesting question, right, to look at. Hmm. The second part होगा क्या आंसर? Second part, B1 less than B. V. नहीं, B1 is less than B2. Prove it ना, लिख के prove करके दिखाओ. Write it and do a comparison. रेडियस का तो पता ही है कंपैरिजन. रेडियस का दोनों का फॉर्मूला लिख लो. एंड यू कैन सी बोथ आर एंटरिंग एट राइट एंगल्स एनीवे. तो Hmm. हेलिक्स का तो क्वेश्चन ही नहीं, सिर्फ Yes, sir. सेंट्रीपिटल है. मतलब क्यू वी बी साइन थीटा है ही नहीं, साइन 90 है.
ठीक है. So you use centripetal force, right? हम्म. ठीक है. So you saying mv square by r is equal to qvb. vv कट गया. So mv by r is equal to qb and your radius is equal to mv upon qb. ठीक है. ये रेडियस नीचे है ना, हाँ. तो मैं इसको इधर ले गया क्रॉस, तो ऐसे आएगा ना ये. यस सर. नाउ r1 by r2 is equal to m into v upon, but you have to decide first the relationship between these two. v1 v2 में क्या रिलेशनशिप है? I think you have just taken कि since radius 1 is bigger, so b2 is V1 greater is than v. also big. सही है. But what is the relationship between these two? V1 and V2. हाँ जी. इसमें भी यही होगा. No, the velocity never undergoes a change because no work is done throughout this. It's a अच्छा. centripetal acceleration is not capable of changing the velocity magnitude. So no work is done. Therefore, v1 is equal to v2. ओके. अगर आपने 5 मीटर से भेजा, अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगी, तो वो इसकी मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं पाएगी, डायरेक्शन जरूर बदल रही है. तो अंदर हम्म. भी ये 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कल रहेगा. ठीक है. यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. एंटर भी 5 हम्म. से करेगा और यहाँ पे भी 5 ही रहेगा हमेशा. और ओके. एग्जिट भी उसी से करेगा बिकॉज देर इज नो सोर्स टू एक्सेलरेट द पार्टिकल. हम्म. इट्स ओनली सेंट्रिपिटल. नॉर्मल एक्सेलरेशन तो ऐसे होती है कि आपका एक चार्ज है और आपने उसको छोड़ा और यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा लिया, ठीक है. तो वो एक्सेलरेट होके एनर्जी प्राप्त कर गया. सो ई हम्म. वी इज इक्वल टू हाफ. पर ये लीनियर है ना. द यस सर. डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस एंड चार्ज इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. हम्म. बट अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए, then this force is not capable of changing the velocity. अगर आप यहाँ पे बॉडी को देखो 11th स्टैंडर्ड में, you apply a force on this body, they are in the same direction. हम्म. Or if you take this force, there is a component which is in the direction of displacement. Say the displacement is here to here. ठीक है? ठीक है. So this force and the displacement are parallel. हम्म. एंड दिस फोर्स का एक कंपोनेंट पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है. ठीक है. ये परपेंडिकुलर है. देखो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का विद डिस्प्लेसमेंट, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता इसकी एक्सेलरेशन में. लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है, wherever f is parallel to the displacement like this, हम्म. यही एक्सेलरेट कर सकता है. ओके. You cannot have a perpendicular force do any work. Not possible. हम्म. You can only have a parallel force. Otherwise, ठीक no है. work will be done. वर्क डन का मतलब है आपने किसी पे काम करा तो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ा दी आपने. हम्म. इधर हर जगह पे फोर्स तो है लेकिन वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है. यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल करेक्ट. सर्कुलर मोशन, बट फोर्स परपेंडिकुलर है. हम्म. फेल्स टू डू एनीथिंग. समझ गया. 5 है तो 6 नहीं कर पाएगी उसको. लेकिन अगर ऐसे फोर्स लगाऊं मैं और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाए, पर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ भी हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक. हाँ, हो रही है.
लेकिन वो सर्कुलर वाली डिस्प्लेसमेंट है ना, टू ऐसे घूम के आ रही है तो हम्म डायमीटर ही, बट फोर्स वाज थ्रू आउट द मोशन, फोर्स वाज परपेंडिकुलर. यहाँ पे वेलोसिटी इज हेयर, यस सर. बट द फोर्स इज रेडियल, again हम्म. perpendicular. So such forces can change the direction. Yes, they can. They are keeping the body in a circle, but they're incapable of changing the magnitude of velocity. ओके. So uniform circular motion, right? So therefore the v1 is equal to v2 throughout the motion. And your हम्म. observation that b2 is greater than b1 is also correct. But आपको पहले ये define करना चाहिए था. ठीक है. आया समझ में? आ गया. Okay. 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 So last question. हम्म. Please go and revise. I am sending you assignments now and making a list of the assignments you have responded to. ठीक है. Okay? आपको दिख जाएगा कि असाइनमेंट नहीं करी तो मतलब प्रैक्टिकली ये है कि probability of score is low and your interest level is not there. हम्म. सर वो उसका टेस्ट शेड्यूल कर ले पोटेंशियल वाले का. कर लेते हैं यार. मंडे. Okay? So this is a situation. Don't go by the distance. It is uniform. ठीक है. Outward magnetic field. Now what happens is you have a situation where two charges are projected inside it. हम्म. One and two. ओके. Once you project them inside and they are practically parallel to each other, there is no gap between them, right? ये हम्म. दिखाने के लिए दिखाया बट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, मतलब सेम लाइन पे ही आ रहे थे इकट्ठे. हाँ समझ गया. ओके, सो वन ऑफ द चार्जेस डिफ्लेक्ट्स बिकॉज परपेंडिकुलर फोर्स लगने वाली है और यू आर हाँ. एंटरिंग इट परपेंडिकुलर. यस सर. सो वन फोर्स makes one of the charges go like this. Circular ही है. हम्म. However, the other one goes like this. मतलब bigger radius, obviously. यस सर. Now, you have to tell me what are the reasons for this difference. Assume that both the charges are moving perpendicular to the. You can do anything. You can compare to justify this answer their masses. You can compare their velocities. You can compare their magnetic field तो दोनों का same है. You can compare their charges. हम्म. So this is your B and this is your A. What are the things you can do? यही है ना, you can play with these यस सर. to control the radius. B you can't control, हम्म. right? You know the out by playing with these, you can control the radius. We have seen that, हाँ. right? And one more quantity I can write is a momentum. Momentum is a product of mass and velocity. ओके.
So you know momentum के directly proportional है radius, which हम्म means bigger is your momentum, bigger the radius. But magnetic ठीक field you can't touch, हम्म not allowed. So question is, what can you do with these? मतलब compare them, MA and MB. So let me not compare the. Yeah, you can. So let me remove one from this, which is a mass. You just need to use these to control the radius, because I've already included mass in my last equation. इसको मैं थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ. ठीक है? ठीक है. So this is called momentum, and you know the radius is बताओ जी. How do you propose to? MAV और MVVB निकालना है हमें. हमें कंपेयर करना है कि why the radius of B could be greater than the radius of A. Why? अच्छा. What factors are controlling such a behavior? Is it the momentum? So you can say momentum of B is greater than momentum of A. That is why the radius of B is greater than radius of A. ओके. Radius is dependent on some things. It is dependent on momentum. It is inversely proportional to the charge. And it is also inversely proportional to B. B तो सेम ही हो गया दोनों में. तो B तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा रेडियस. नहीं. दोनों पे बराबर असर डाल रहा है. तो क्यों रेडियस ऑफ बी रेडियस ऑफ ए से बड़ा है? व्हाट आर दोज फैक्टर्स? आई एम सेइंग कंपेयर वेलोसिटीज, compare charges, and compare this to decide why RB is greater than RA. ए. It's like doing a full surgery कि हो क्या रहा है. हम्म क्वेश्चन है किन कारणोंवश रेडियस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ ए हो सकता है? क्या कारण है वो? व्हाट आर दोज रीजंस? ठीक है. एंड यू नो द रीजंस आर एक्चुअली कंट्रोल्ड फ्रॉम हियर.
हाँ जी, एनी थॉट्स? लेट्स फिनिश इट अप. हम्म, यार ये देखो ना, सिंपल कंपैरिजन ये है दैट रेडियस is directly proportional to momentum. So yes higher sir. the momentum, higher is the radius. So first reason could be that momentum of B is greater than the momentum of A. Okay. So radius of B is greater than radius of B. Second is the charge of B is smaller than the charge of, बाकी सब कुछ बराबर रखें अगर, मास अच्छा. सेम रख दी, वेलोसिटी सेम रख दी, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है, हम्म. यहां से भी तो कंट्रोल कर सकते हो. अगर जिसका Q छोटा हो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा. ठीक है. यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं ये बिहेवियर हाँ. बड़े रेडियस लाने के लिए. ओके, लुक एट वेलोसिटी. इफ सबका मास बराबर हो लेकिन वेलोसिटी तो मोमेंटम में कवर हो गया. हाँ. इफ द मास इज सेम, चार्ज इज सेम, ये तो सेम ही है, एंड वेलोसिटी पे कंट्रोल करना है. इफ आई कीप द वेलोसिटी ऑफ बी greater than the velocity of A, हम्म. the assumption is the masses are same. ओके. कंपेयर करने का मतलब है बाकी चीजों को फिक्स करो और फिर उस पैरामीटर पे कंपेयर करो. ठीक है. So there are multiple ways you can have this behavior. One, the velocity of B is greater than V, एंट्री पे जो हुई थी velocity, हम्म. तब भी वो, और मास दोनों का सेम था, चार्ज भी सबका सेम था. यस सर. So there are, how do you control the radius? You can control through momentum, directly proportional. If the overall momentum of B is greater than momentum of A, you get a bigger radius. If the charge of B is smaller than the charge of A, but they have same momentum, momentum same है यहाँ पे, ठीक है. मोमेंटम पे कंट्रोल नहीं करना, सेम रखना हम्म. है. तो चार्ज छोटा कर दो तो भी सेम बिहेवियर एग्जिबिट होगा, बिकॉज करेक्ट. रेडियस इज इनवर्स. तो आपको ये दिखाना था डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ कहाँ पे है, समझ गया. कहाँ से कंट्रोल हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इस तरह के बिहेवियर की. ओके. अब मेक समझ सेंस आ नाउ? गया. हाँ. I'm going to send you assignments. Please start completing them. I will then share a chart with you as to ओके. what all have you done. Okay, I will then announce a complete mathematics and complete physics test also when I have to go start moving into full chapter wise and then full course, so that you know how to write for a full course also, board as well as JEE mains. समझ JEE गया. mains complete MCQ reasoning. Board will be thumb theoretical also. अब board में भी you have seen there is nothing called as theory. हाँ. It's all numerical यार. यस एक सर. आदि होता है कुछ होता है डिराइव करने वाला, बाकी तो सारा रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर बना दिया. हम्म. ठीक है जी, मिलते ठीक हैं है. फिर शाम को, एंड वी विल मेक अ चार्ट टू सी हाउ आर यू प्रोग्रेसिंग इन मैथ्स, हाउ आर यू प्रोग्रेसिंग इन ईच ऑफ द 11 12th. चार बना लेंगे शीट्स, चैप्टर के नाम लिख लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन, क्या क्या कंप्लीट करा है, किस किस की असाइनमेंट नहीं मिली, नहीं कंप्लीट हुई. वी विल गिव इट टू यू एंड गिव यू अ डेट टू कंप्लीट नाउ. ओके सर. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच समझ फॉर योर टाइम.